Hello, Assalamu alaikum. I'm Syed Asif Naqvi, Assistant Professor, Department of Physics, Government Degree College, Malir, Cantt. आज मैं आपको एक बहुत अहम प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसका ताल्लुक सेकेंडरी फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 से। इंशाल्लाह ये आपके लिए, आप तालिब इल्मों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नाउ वी विल स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को थॉरली पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली डेटा फॉर्म करेंगे। पहला जो मतलब स्टार्ट में हम डेटा फॉर्म करते हैं। 3 picofarad capacitors are charged separately to the potential difference of 100 to 103 volts. Data. Let's say C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to 1.0 picofarad. Pico is a multiplier which can be replaced by its notation 10 to the power minus 12 farad. Because all the three capacitors have same capacitances. C1 is charged to V1 is equals to 100 volt. V2 is equals to 200 volt and V3 is equals to 300 volt. Then the capacitors are joined in parallel. Capacitors को आपस में parallel join कर लिया गया. What is the resultant potential difference? Let's say the resultant potential difference is denoted by VAB. Why we named it VAB will be clear when we draw a diagram. Okay, sometimes we have to draw a diagram to solve the problem in a better way. For better understanding, we must draw a diagram. Unless you draw a diagram, you can't understand it. So we draw a diagram. Let's say this is C1. This is charged to a capacitor to a battery of 100 volt. V1. फर्स्ट करें, सपोज दैट कि यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है, जब इसे 100 वोल्ट तक चार्ज किया गया, चार्ज स्टोर होगा बिकॉज कैपेसिटर is a device in which charge is stored. Let's say this is Q1. When V1 is applied, this is Q1 and this one is figure 1. Now figure 2. C2, V2, let's suppose here the charge store is Q2 and this one is figure 2. Now figure 3. V3, C3,
let's say where the charge store is Q3. चूँकि C1 is charged to 100 volt, C2 is charged to 200 volt and C3 is charged to 300 volts, so different amount of charge will store in each capacitor Q1, Q2 and Q3. This is figure 3. Now come to the next page. Now they are, after being charged, they are joined to parallel. This is the common end when the three capacitors of same capacitances are joined in parallel. So new charge distribution will take place on each capacitor. लेकिन इसके नतीजे में एक कॉमन वोल्टेज डेवलप होगा VAB. As you know, in case of parallel combination, since all the capacitors are having the same charge, same capacitances, so they will store same charge. Let's say this is Q dash 1, Q dash 2, Q dash 3. Since C1, C2 and C2 are identical, so Q1 dash and Q2 dash, Q1 dash is equal to Q2 dash is equal to Q3 dash. Also, according to charge conservation, Q1 plus Q2 plus Q3 will be equal to Q1 dash plus Q2 dash plus Q3. This is sort of electric equilibrium. जिस तरह से जब एक हॉट बॉडी कूल बॉडी थर्मल कांटेक्ट में आती तो एक फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं, यहाँ भी ऐसे ही होगा कि एक फाइनल वोल्टेज कॉमन वोल्टेज डेवलप होगा जो हमारा टारगेट है. हमें वी हैव टू फाइंड VAB, हमें VAB फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फार्मूला. हमें देखना चाहिए कि अगर हमें VAB मालूम करना है तो हम कैसे VAB फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या हमारे पास कोई फार्मूला है VAB का इस डायग्राम के हवाले से जिसे हम फिगर 4 का नाम दें तो है या नहीं. तो आप देखें कि C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो पैरेलल कम्बिनेशन है, यू नो कि पैरेलल कम्बिनेशन अगर कैपेसिटर्स पैरेलल कम्बिनेशन में हो तो फिगर 4 के मुताबिक उनकी जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी. दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ C1 प्लस C2
plus C3, and C net will be equal to, all are the same, 1 plus 1 plus 1 is equal to 3 picofarad, means 3 into 10 to the power minus 12 farad. And according to the law of capacitor, Q is equals to CV. This is the law of capacitor. So Q will be equal to C net of the combination and the common voltage VAB. This implies that VAB is equal to Q over C net. So we have developed a formula, हमने एक formula develop कर दिया जिससे हम VAB find out कर सकते हैं, जिसमें C net तो हमें पता चल गया है कि 3 into 10 to the power minus 12 farad, but we don't know Q. और जैसा कि मैंने यहाँ शो किया कि Q dash, Q2 dash and Q3, चूँकि हमें VAB पता नहीं है, लिहाजा we cannot find Q1 dash, Q2 dash and Q3 dash. But according to the conservation of charge, Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to Q1 dash, Q2 dash plus Q3 dash. So VAB will become Q1 plus Q2 plus Q3 divided by C net. लिहाजा हम फिगर 1, 2, 3 को फॉलो करते हुए Q1 एंड Q2 और Q3 फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका सम वही होगा जो Q1 डैश और Q2 डैश और Q3 डैश का सम है. अगेन VAB इज इक्वल टू Q1 किसके इक्वल होगा, लॉ ऑफ कैपेसिटर के मुताबिक C1 V1 प्लस C2 V2 plus C3 V3 divided by C net. Now come to the next page. Now VAB is equal to, what is C1 is 1 microfarad, 1 picofarad, 1 into 10 to the power minus 12, and V1 is 100 plus 1 into 10 to the power minus 12 into 200 plus 1 into 10 to the power minus 12 into 300. ब्रैकेट का यूज़ जो है वो अच्छा रहता है, प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है. 3 into 10 to the power minus 12. Now if you take a common, so 1 into 10 to the power minus 12, you take it common, then 100 plus 200 plus 300 divided by 3 into 10 to the power minus 12. So minus 12 cancel out, becomes 3 to 6 and 3 to 5 and 100 600 and divided by 3. 3 ones are 3, 3 2 are 6. That is the required voltage, common voltage is 200 volt. This is the answer.
ایکچولی نومیریکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف سولو کرنا ہے، ہمیں ان آئیڈیاز کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تھیوری سمجھ لی ہے تو ہم نے یہ ٹاپک 100% سمجھ لیا ہے، دس از رانگ اپروچ. جب تک آپ اپنے آئیڈیاز کو اپلائی نہیں کریں گے تو ہماری جو ایکسیس ہے فی الحال وہ نومیریکل تک ہے نا، کیونکہ ہم کوئی مطلب ظاہر ہے وزٹ وغیرہ کرتے نہیں ہیں، یا ہماری لیبس جو ہیں ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتی نہیں ہیں کہ ہم بہت سارے آئیڈیاز کو اپلائی کر سکیں. تو نومیریکلز ہے، آپ دیکھیں او اور اے لیول کی بکس میں ہر چیپٹر کے اینڈ میں آلموسٹ 60 to 80 نومیریکلز ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو جب وہ نومیریکل سالو کریں تو اپلائی کر سکیں. تو آئی تھنک سو کہ بغیر ایپلیکیشن کے ٹھیک ہے ہم کبھی بھی کسی ٹاپک کو 100% نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا نومیریکلس کو امپورٹنس دینی چاہیے. شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلد منظر عام پر آئے گی.